हेल्प कम हो गई यार। साले माँ का मारता है। ऊपर चढ़ के मार रहे हैं ये साले। ऐसे भूत नहीं पता कहाँ से आ जाते हैं मारने के लिए। अच्छा इनको मार दिया था। अच्छा यहाँ से भी स्टोन वैन गार्ड मिलेगा। तो यहाँ पे और कुछ नहीं मतलब। कुछ नहीं था, सिर्फ गोल्ड था। तगड़ी चीज नहीं थी सिर्फ गोल्ड। स्टोन वैन गार्ड तो अभी नहीं हारेगा यार। और स्टोन वैन गार्ड के पास कोई यार। स्टोन वैन गार्ड तो अभी नहीं हारेगा यार। अरे यार अभी नहीं हारेगा स्टोन वैन गार्ड यार। कैसे हार स्टोन वैन गार्ड भाई अभी नहीं हार पाएगा मेरे को लगता है। मारना ही पड़ेगा क्या। अबे नहीं जिंदा वापस जिंदा हो जाते ना। ये देख ये इनको मारा था। माँ चोद रहा है। तो मतलब यहाँ से भी कुछ नहीं मिलता मतलब स्टोन वैन गार्ड ही आता है। अब ये बड़े वाले वापस तो आते हैं। हाँ मेन Stand ready. We are in dire times. कहाँ पे? यहाँ पे? भाग के आ रहा है। और कोई नहीं है? नीचे वाला नहीं है? नीचे का रास्ता नहीं है क्या? तू देख क्या है? तू नीचे से देख क्या है कि नहीं? अरे यार
बस बिल काफी ज्यादा ही देता है यार ये। जा ही नहीं सकते जाने। ये अगले साइड मार के तो कुछ नहीं था। तू कह रहा स्टोन वैन गार्ड ही आएगा। एक तो स्टोन एक तो बैंड जो स्टोन वैन गार्ड के पास वो भी तो नहीं रहता, क्या कहते हैं, इंसेन। तो अपन फुल हेल्थ के साथ भी नहीं जाते उसके पास। क्या? हाँ मार दिया। अब इससे लड़के आगे मेरे ख्याल से स्टोन ही। हाँ यहाँ पे स्टोन वैन गार्ड ही है, मुझे पता है। यहाँ पे स्टोन वैन गार्ड ही मिलता है, मुझे पता है। कौन था? डेजर्ट है यार ये तो। क्या कुछ दिख तो रहा है बट नीचे जाऊं कैसे? ऊपर जाने का है बस रास्ता। ये यहाँ पे कुछ है क्या? यहाँ से मेरे को लगता है स्टोन वैन गार्ड ही आता है ना। अबे यार इसको मारो, बेंचो एक बार नहीं मारो तो वापस पीछे से आओ। अबे नीचे जाने का कोई रास्ता नहीं है मेरे भाई, रास्ता होगा तो मिल जाता। अब इसको मारना पड़ेगा स्टोन वैन गार्ड। इससे भाग भी तो नहीं सकते कहीं पे। राइट हैंड साइड में एक रास्ता है और यहाँ पे भी रास्ता। हाँ कोशिश ही कर सकता हूँ उसको मारने की, और कुछ नहीं कर। अरे पत्थर फेंक रहा है।
अरे रे, अरे रे, आरती से लॉक होता है। अरे ये क्या मुश्किल। अरे रे, आ, अरे बाप रे, King Toon Vanguard in my balls, in my balls. वापस क्यों जाओ? ऐसे कैसे चले जाओ? पीछे जाओ। अबे टाइगर टेंपल पे माइंड कोर लगाना पड़ेगा ना वहां पे। पहले हेल्थ तो बढ़ा दूं यार, हेल्थ ही नहीं है। कहाँ, यहाँ पे? नहीं, पीछे तो कुछ नहीं था। कहाँ पे? कहाँ है? ये यार, रेस्ट कर लेता हूँ। क्राफ्ट भी आया यार कुछ। अबे क्राफ्ट करता हूँ ना बट
भाई एक भी हुआ तो कुछ भी बढ़े तो अच्छी बात है ना। इसमें +10 हो रहा है भाई। सही है मैच, तगड़े हो गए अब अपन। अबे अब टाइगर क्या जाना ना। यार वो वाला वेपन खोलने के लिए अपन को यार वो जगह पे जाना है यार। कोई सीक्रेट जगह है वहां पे जाना है अपन को। बहन से कितने बार मिलता है ये? बार बार रुक जाता है क्या? यार तो पता है अपन मेडिसिन भी बना सकते हैं अगर अपन ये यूज करें ना। तो यही बेटर है क्या +3? हाँ अभी नहीं, इसमें अगर जाएगा ना तू तो यहाँ पे ये जो चीजें हैं इनको अपन यूज कर सकते हैं। टूट द आई ऑफ unyielding to bone, each imperfection harboring its own perfection. Use instantly remove chilled state and slightly increases chill resistance. वो तो यार इतनी जल्दी नहीं खुलता होगा। अभी तो सेकंड चैप्टर ही है, भाई 6 चैप्टर्स है। हाँ वही तो कह रहा हूँ, 6 चैप्टर है। बट हाँ बट यार सेकंड चैप्टर काफी एंड पे आ चुका है। क्या होने वाला मिला? नहीं कोई नया ड्रैगन ना मिल जाए मादर चोद। वो ब्लड ड्राई हो गया। नई लोकेशन आ गई यार। हिडन लोकेशन है सर। अरे यार झोपड़ी वाले छुप के आते साथ में। ये कुछ तो है। Miraculous pill concocted by the god longevity in the southernmost reaches of the land that massively increases maximum health meter बढ़ गया। हाँ हाँ हेल्थ बार बढ़ गई, वो तो देखा ही, देखा हुआ। सैंड स्टॉर्म ऑफ सहाली ढूंढना है अपन को। वो सीक्रेट लोकेशन है, वहां से अपन को आयरन मिलेगा और उससे अपन को क्या है, अच्छी स्टाफ मिल जाएगी। एक बार अच्छी स्टाफ मिल जाए ना, डैमेज तगड़ा पड़ेगा।
अरे अरे क्या मार रहा है। अबे कैमरा एंगल ही नहीं आ रहा फादर। टोल मिली है कोई। क्या क्या मिला? चल कहाँ जा रहा है? मतलब क्या नीचे ही जाना है ना? 且慢走，且慢走，再走怕你也无头。मेन ड्रैगन आने वाला है। Easy, easy. क्योंकि अपन ने ये वाले चैप्टर में बहुत सारे ड्रैगन मारा है ना, तो याद भी थे। क्या हमें नहीं यार, अगर अपन को सही चीजें मिलते रहे तो गेम इजी रहेगा। पावर This befits you grandly. Hey, luckily I've kept it close for its rightful owner. a flock of many blowing strands into the air creates duplicates. हम्म? 无事有莫强求，方便法门归结处。旁人以为稀罕我，做到旁门不入了。ये क्या है? It's you again. You've visited the Yaoguai. तेरे को कैसे बता? अबे रुक जा, अभी जा नहीं सकता यार, हिल नहीं पा रहा हूँ। हाँ हाँ कर रहा हूँ यार, 2 सेकंड यार, शैडो क्लोन कर रहा हूँ। माइंड 4। वो तो मिल ही नहीं रहा बहनचोद आयरन। हाँ तो बाई करना पड़ेगा ना आयरन यार। कौन सी मेडिसिन बनेगी? कुछ भी तो नहीं बन रहा है बहनचोद, दिखा क्यों रहा है? अच्छा उसने शैडो दे दिया, शैडो बहुत काम आएगा।
हम्म। Moderately increases the damage dealt by the duplicates nearby. और एक बढ़ा दूं क्या कहीं से लेके? रॉक सॉलिड यार बेकार लगा मेरे को। काफी सारी चीजें इंक्रीज करनी है। स्टैमिना मैंने सर्वाइवल का एक हटा के मैंने स्टैमिना में भर दिया है। अब ये माना का कैसे भरेगा ये समझ नहीं है। ये माना का भरता हूँ यार, कहीं से माना का भरने की कोशिश करता हूँ, क्या बोलता हूँ, है ना? इसके बाद जाना है भूरी में। खरगोश थोड़ी ना, भेड़िया है वे। May Lord Lao illuminate your path, brave one. से हेल्थ बढ़ती है यार, मेरे को माना बढ़ाना है यार, ये इससे बढ़ेगी माना। अरे अरे वही तो कह रहा हूँ, माना बढ़ाना। From yin and yang, 5 elements emerge. Each nature inherits its unique creation. Each form embodies a universe. अबे माना यार, वो स्पेल यूज कर सकते जिससे यार, वो ब्लू वाली लाइन वही कहने लगता है ना, इनसफिशिएंट इनसफिशिएंट माना बोलने लगता है। ये देख, हेल्थ भी बढ़ा लूंगा। मटेरियल ही नहीं बचा मेरे पास। मॉडल मेडिसिन, अच्छा इससे कम कर सकते हो और फिर बाकी चीजें बढ़ा सकते हैं, बट मेरे को माना ही चाहिए वे। ये क्या है? longevity decodation upon use considerably increase से होता क्या?
चल तो ही नहीं रहा कुछ। नहीं यार, ये सब नहीं खरीदना है ना। I can never repay you for saving my life. Oh, here, a token of my gratitude. कहाँ पे लगेगा? निकलता हूँ, अब आगे निकलता हूँ। यार मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि वो जो आयरन है वो कहाँ मिलेगा मादरचोद। ये लोग बोल रहे कोई सीक्रेट हिडन ड्रैगन भी है जिसको मारना पड़ता है। मुझे लग रहा है मेन ड्रैगन आने वाला है। Hurled by gales to and fro, changed from our former glow. कुछ नहीं When the दिया Long ना। King defied the court, the Jade Emperor was set to punish his entire house. The four sons of the Long King, deities of the four waters, fled. Deities? Not even they have control over their destinies. Once caught in the threads of karma, all are mere offerings on the platter. Four longs for the four waters under the sky. Their destiny is sealed, as yours and mine. When the Long King defied the court, the Jade Emperor was set to punish his entire house. The four sons of the Long King, deities of the four waters, fled. Deities? Not even they have control over their destinies. Once caught in the threads of karma, all are mere offerings on the platter. Four longs for the four waters under the sky. Their destiny is sealed, as yours and mine. फोर लॉन्ग यार, फोर लॉन्ग। अपन ने एक ब्लैक लॉन्ग को मारा था, एक वो उसको मारा था, क्या कहते हैं वो ड्रैगन जो लूम था। एक ही स्पार्क मिली यार इस बार। हाँ बस आवाजें आ रही है यार, बड़ी खतरनाक है यार। Besides every sage, a villain resides. Beneath every mountain, an abyss lies. Where disparities persist, Yeah, yellow and sage. bloodbaths may arise. I cannot escape, and nor can you.
मतलब इसके अटैक्स की डॉजिंग सीखता हूँ यार। A skinny wretch like you has come far enough! शैडो क्लोन यूज किया बट यार हुआ नहीं कुछ। अरे बाप रे। अरे ये क्या चीज है? अरे रे ऐसा मूव डाला है भाई। हाँ चोटी। शैडो यूज ही नहीं कर पाया, पता नहीं क्यों। अरे मैंने यूज किया था, उसने मेरे को मार दिया उसके बीच में। वापस करना पड़ेगा क्या शैडो क्लोन का? वो हो गया होगा ना वो तो। A skinny wretch like you has come far enough! तो गायब हो गए यार सारे। यार शैडो क्लोन को यूज करना सीखना पड़ेगा यार। शैडो क्लोन को यूज करना सीखना पड़ेगा थोड़ा सा। हाँ सीखना पड़ेगा ना उसको कैसा है। एक बार तो हाई स्टैंस मार, दो हाई स्टैंस मार।
मैंने ट्रायंगल मारा था बट वो लोग ने ट्रायंगल कुछ भी मार रहे थे वही। और एक तो इनको जनरेट होने में टाइम लगता है। A skinny wretch like you has come far enough. अरे यार गलत टाइम यार। चल यार तू बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, तू बाद में कॉल कर। A skinny wretch like you has come far enough.
skinny wretch like you has come far enough! A skinny wretch like you has come far enough! क्या बकचोदी है यार? Has bested the monkey once again! Open your eyes and behold!
अरे यार How dare you come back? Why do you have to come back? अरे यार Open your eyes and behold! A skinny wretch like you has come far enough!
again. Open your eyes and behold! A skinny wretch like you has come far enough! Dare you come back? Why do you come back?
One more taste of my Samadhi wind! Let the wind kill! The monkey once again. Open your eyes and behold! How dare you come back? Why do you have to come beyond your mercy, master? How dare you come back? Why do you have to come back? All the realms can withstand its power! फिट यार
skinny wretch like you has come far enough! Open your eyes and behold! How dare you come back? Why do you have to come back? A skinny wretch like you has come far enough!
मदरचोद। How dare you come back? Why do you have to come back? अबे कैसे चलिए हाँ? One taste of my Kamadi wind!
सी बच गई थी यार। A skinny wretch like you has come far enough! अरे You disciple, you're a fool. You stole Erlang's spell and snatched the great sage's relic. You even took your master's heed. Just for a short reign over this barren valley.
am Bodhisattva Lingji of New Mount Sumeru, the warden of this rat. After the great sage's passing, his sixth senses were scattered across the mortal realm. This thieving rat chanced upon one of them, yet hindered by his meager might, he could not absorb its power. Thus he schemed with wicked intent. A victim of his deceit, I had my head taken by him. The sense requires such a grand container to release its power. I should bear the blame for his reign of havoc upon this ridge again. Through your valor and sagacity, order has been restored. You are the sole worthy one to keep it. Please, keep it secure in my stead.头上烈日当下了，周经一贯来到。Men, beasts, Buddhas, Yaoguais. Each of them bears a distinct root from birth, superior and inferior. None should disturb what's decided. Am I right, Sun Wukong?
With the wind and sand you've endured here, did you reach the Forgotten Kingdom at the end of the land? Did you find the clash of stones and the fall of Tiger's acolyte? If you shut your ears and heed only your inner murmur, I fear the more you yearn for flawless endings, the further you'll stray from the path. Rats and cats, neither grasped their destiny, and yet neither admitted it. Listen closely, young one. Their complaints ride upon the wind. Leave a like, it really helps out my channel, and subscribe, and I'll see you in the... Be there for big moments, even when you're not. Send money home with Remitry. Hello everyone, in order to get refined iron sand, I'm first going to cover how to get it in chapter 3 and beyond, and then at the end of the video I'm going to show you the couple of ways that you can get it from chapter 2, so that you can make the long wreath staff within chapter 2. Starting with chapter 3 and beyond, you can get refined iron sand from defeating stronger enemies, and as you can see on the screen now, here are some of those enemies. And most of these enemies, you're going to be able to rest at a shrine and then come back to wherever you found them, fight them again, and then you have a chance of the refined iron sand dropping again. So basically you can farm it off of them. And then aside from bigger enemies, you can also get
get refined iron sand from defeating bosses. The next way to get refined iron sand, and you'll probably get a lot of it from doing this, is from opening chests. However, as soon as you grab it from the chest, you can't open the chest again to get more of it. And then as you continue to progress through chapter 3 and beyond, you will be able to buy it at some keeper shrines. But once again, you're only going to be able to buy a limited amount, just like the chests. As soon as you buy the refined iron sand from those keeper shrines, you won't be able to buy it again. And then moving on to chapter 2, the reason that you'd want to get refined iron sand in chapter 2 is so that you can create the long wreath staff. The first piece of refined iron sand you're going to get is from progressing to the secret kingdom of Sahali and then accessing the first keeper shrine once you get there, called Sandgate Pass. And I'll link a video right now on how to get to the secret kingdom of Sahali. And then once you're at the keeper shrine, go to the store and you can buy one piece of refined iron sand there. But that's the only piece you can buy, and then it won't get restocked. After that, you're going to progress further on through the secret kingdom of Sahali and then defeat the boss called Wukong. Once you defeat Wukong, you will receive one refined iron sand. And then finally, in order to get the last two pieces of refined iron sand, you need to defeat the boss called Black Long. And that boss is behind the sand waterfall. And if you don't know how to get behind the sand waterfall, I'll link a video right here on where it is and how to access it. And then one final point, you can get refined iron sand after you complete chapters. And that's all there is to it. So if you have any questions at all, please post them in the comment section. Subscribe for more. Thank you for watching, and I'll see you all in the next one. Hello everyone, in order to get to the secret kingdom of Sahali, I'm going to show you how to get there from the start of chapter 2, but first we need to do a couple of different things. Where we need to head next. So first we're going to grab this keeper shrine just up to the left, which is the Valley of Despair keeper shrine, and then we're going to travel into this cave. And then you're going to come up to a cliff edge inside this cave, and then you're going to watch a cutscenes, and you are going to want to defeat this boss because you're going to get the R-hat gold piece from defeating this boss. And then once you have this item, we now need to get the Silvering Stone. Now I'm going to show you where to go to get that. And then right here, we're going to grab the temple entrance keeper shrine. And then at the top of the temple, we're going to have our next boss fight against the Tiger Vanguard. Once you've defeated this boss, then we just need to progress a little bit further, and I'll show you how to get the rest of the way to the Silvering Stone location. To break it, you will receive the Silvering Stone. And one additional point, you can also get a Silvering Stone from the Man and Stone Merchant, and I'll link a video to that right here. The next step we need to do is now progress to a Drunken Pig. And there are two different ways to get to this Drunken Pig from this location. One of the directions requires you to fight two more bosses. We're just going to go the path of least resistance. We're going to go back to a Keeper Shrine and then fast travel back to the Valley of Despair Keeper Shrine. And then once you're at this location, this is where you fought the King of Flowing Sands and the second Prince of Flowing Sands. And then we're just going to travel off to the right this time from this location and go across this bridge. And just before we go across this bridge, we're going to grab one final item that we're going to need later on, and that's called Jade Lotus. So instead of going across the bridge, you're going to go just a little bit, go across this bridge shrine. And then once you're at this location, this
What's up, guys? I'm Cyrobe, and as someone who has an in-depth knowledge of what I think the best weapons are in Wukong, there's a few ways that each weapon is getting graded for my list. First off, I'm obviously going to focus on the weapon stats, any additional path, and a weapon of legendary value due to how hard the legendary weapon is to obtain and how late into the game a mid-weapon very late. I try to staff this bonus content pack with some armor and digits means barely anything, as your base damage will be so low and your crit damage multipliers are even lower, making it a weapon that really isn't worth the price tag. It's especially relevant considering that this staff doesn't even have any upgrade tiers. So the fact that you have to pay for this weapon and it almost gets immediately power crept by the two other staffs featured in Chapter 1 makes it the worst staff on this list. I'm half joking about the whole price tag part, but really to pay any money for a staff that can't even be upgraded and gets immediately outscaled is kind of a meme. The Willow Wood staff is the staff that everyone starts with by default. It does branch out into a fairly, and at the very least, doesn't cost, is a no-brainer to upgrade your Willow Staff into as soon as you can. The passive is fairly good for new players since to buff early game staffs being accessible so early on in the first chapter at the midway point and leading into the Wind Bear Staff can be obtained at the very end of Chapter 1 after the final reveals yourself after attacking in Cloud Step, gains an increased critical strike chance. The exact modifier isn't represented directly on the weapon, but I discovered it's applied to you the instant you hit something, and from my third-party tool is an additional 25% crit chance on top of your base crit. So in this clip, I had 10% base crit chance from my stats in the Wind Bear Staff, and after the Unveiling Strike, it went from 10% to 35% the moment I hit something, which is a pretty massive increase. It's not a guaranteed critical strike chance though, and even with its modifier, it's very likely that you won't crit with your Unveiling Strike attack, which makes the passive pretty hard to notice, especially only the passive being tied to your Cloud Step and obtained in. Alright, this is where my list starts to get spicy. At the very bottom of B tier, almost deserving of C tier, we have the purple epic tier Chitin Staff. Yes, this is where my and obtained in Chapter 2 that are significantly better than this one, and don't build from it, nor requires defeating the final boss, which makes the Wind Bear Staff worthy of its C tier placement. Alright, this is where my list starts to get spicy. At the very bottom of B tier, almost deserving of C tier, we have the purple epic tier Chitin Staff. Yes, this weapon is, in my opinion, the worst epic rarity staff in the game. For a staff with 80 base attack and 5% crit chance, it's pretty decent stats-wise, but the passive is almost non-existent. This weapon passive allows you to heal HP when you perform a heavy attack that consumes a focus point, which are the white dots. The more focus points you consume, the more it heals you for. Sounds great on paper, right? Except for the fact that this heals an abysmally low amount that would never save you from anything, even with a max focus value of 4 dots. The healing is atrocious and would only be good very early on in the game. There's 1, 2, and 3. At that point, the healing is already unnoticeable. For any worse, I would have put it in C tier. Here's a good example of an epic tier staff that is actually viable to craft early on. The Rat Sage staff can be obtained by defeating the final boss of Chapter 2,
the Yellowwind Sage, which is by no means an easy boss. He's a fairly hard fight, which when defeated allows you to craft this weapon. It only has 13 less damage than the Chitin Staff, but 2% more crit chance, and a passive that actually does something, increasing your damage on light attack combo spams or the unique mobile spin ability, granting both of these bonus damage from its passive and even slightly more attack range, which makes your attacks land a little bit more consistently and feels a lot better as far as early game weapons go. Again, this staff is better than the Chitin Staff because it's obtainable at the end of Chapter 2, which is more than a whole chapter earlier than the Chitin Staff, and provides a decent passive steroid to your light attacks and mobile spin attacks. The only problem with this staff is that there are other staffs in Chapter 2 that are better than this staff and don't require defeating the final boss to obtain. And even when you do defeat the final boss, there's just a handful of options that are better than this staff. It's very good early on, but can be replaced very easily. You also can't even upgrade this staff to its final tier until you defeat the final boss of Chapter 5's secret area, which is also towards the end of Chapter 5 regardless, meaning that once you get this staff, you can't upgrade it for nearly 3 chapters, making it worthy of being towards the bottom of B tier. This is where the list gets even spicier, as I genuinely believe the Cloud Pattern Stone Staff is better than every other staff that I've mentioned up until this point. It provides 60 base attack, which is fairly solid for a weapon that can be and only gets worked to pillar or in smash stance. This weapon seems to increase any other type of smash stance and big tier weapons that are the final boss, but now if Poison to help you achieve even more stats, as its type staff after game, but deserving of beat Generic Centipede, but passive, with small again on your second playthrough before you can even craft this staff. And while it does provide the highest base attack out of all the other weapons with a crit chance of 9%, the passive might be this weapon's passive, self-inflicted debuff, and the duration weapon's passive of this weapon, and it isn't even that. And the worst into the end of your second playthrough to obtain it. Obviously, its stats are lower with 75 base attack and no crit, but additionally, you can tell, but it's in mid-game. The spike even more viable special attacks to favorite personal stand instead, and it's actually found a unique moveset to go with it. The long wreath staff is pretty much the equivalent of the Chubai spear, but this staff is dedicated for pillar stance enjoyers instead, and it's actually found earlier than the Chubai spear, being located earlier on in Chapter 2. Personally, I dislike pillar stance as it's my least favorite personal stance of the 3 main stances in Black Myth Wukong, but I acknowledge that this staff has a modest base attack value of 70 attack and further buffing specifically pillar stance special attacks. The best part of this weapon is that it can be obtained extremely early once again, giving you an extremely high base damage weapon very early on, which makes it even more viable for those who prefer to use pillar stance. And even if you don't like pillar stance, picking this up for a good high damage early game weapon is also fairly valid. The Spike Shaft Staff is a fairly great legendary weapon. It's one of the
हेलो चिंके, मैजिक देखा? मैजिक जादूगर का मैजिक देखा? जादूगर का इट्स मैजिक, इट्स मैजिक। चिंके यार सुनना है यार। भाई यार मेरा वो खाने का बहुत मन कर रहा है यार। क्या मन कर रहा है? यार वो खाने का बहुत मन कर रहा है, क्या कहते हैं, चिकन भूना। यार लेके आ जाना भाई। कहाँ पे तू? बस का बैठा हूँ। अरे बहन चोद, कुछ खाने को लेके आ रहे हैं? तो कुछ लेके नहीं आया, कुछ खाएंगे, पूरा खा लेता आज। घर में बना ले। घर में कुछ सामान ही नहीं था। से यार पहला ड्रैगन भी आ गया मदर से। मकाओ चीफ है बहन चोद, बंदर पागल, पागल बंदर है भाई। अरे माँ की चीफ। अरे रे बंदर मादर चोद, माता माता बंदर मादर चोद। मारेगा बंदर, मारेगा बाप को, मारेगा खत्म, मर गया बंदर। ओए और ये साले अभी तक मेरे साथ है। ओ देखा चिंगा, जादू ऐसे गिरता है जादूगर तेरा। अबे अब थोड़ा इजी होने लग गया गेम, समझ रहा है, क्योंकि अब नए वेपन्स और मस्त चीजें खुलने लग गई ना। अब थोड़ा नहीं तो यार यही ऐसे ही यागुची पहले जब आते थे बहनचोद फर्स्ट लेवल पे, माँ चोद देते थे बहनचोद, हारते ही नहीं थे। तो पावर्स खुल गई, बहनचोद लगाओ पावर पे पावर, पावर पे पावर। नई स्टैफ भी खोल दिया यार मैंने। मतलब मैं सोच रहा था यार वो रैट स्टैफ खोलूं, बट फिर मैं सोचा यार ये लॉन्ग ब्रेथ स्टैफ सबसे बेस्ट है। थोड़ी सी रिसर्च की मैंने, पता चला ये स्टैफ मादर चोद है, ये गैंड मार। क्या रिसर्च की? मैं तो यूट्यूब में देख रहा था कौन सा स्टैंड है। हाँ वही, मतलब थोड़ा सा मतलब देख रहा था कि कौन सा स्टाफ खोलना चाहिए। अब क्योंकि आयरन थे नहीं ना अपने पास ज्यादा, 4 ही थे, और ऊपर से 21,000 मैच बिल लगता है इनको खोलने के लिए। यार ये बड़ा सा आदमी है उसके सामने। अरे मार दिया सबको, सबको मार दूंगा। कितनी देर में घर आ रहा है? मैं 6 बजे तक आता हूँ, बाल भी काटना है यार मुझे भी बाल कटवाने जाना, साथ में चलेंगे बाल कटवाने? आ जाएगा बाल काटना है। यार प्लेनेट बार्बर ही जाऊंगा मैं तो। 6 बजे तक आता हूँ। जल्दी आ तभी जा पाएंगे, जो अरे तो वैसे भी आज ट्यूजडे जो है, ये सब बिजी रहेगा। अरे बिजी नहीं रहेगा, बट उसकी दुकान तो बंद हो जाएगी। कितने बजे बंद होती है? 10 बजे? 9। तो बस
बस आज ही की छुट्टी है यार, कल फिर वापस जाना है, बट अगले हफ्ते यार मेरी सैटरडे छुट्टी दी यार, तेरी तो पूरी 50 रहेगी ना। नहीं तो भाई शिफ्ट शिफ्ट है, 3 से शाम के 11:30 तक। हाँ, 3:30 शिफ्ट। कहाँ पे फंस गया है? कुछ रास्ता देख रहे जिनका यहाँ से निकलने का? यार मैं तो लाइव देख रहा हूँ तेरे को। हाँ देखना आसपास, देखना कहीं होगा यार, रास्ता रास्ता ठीक ही होगा भाई। कहाँ से आया था? नहीं पीछे से आया था। तो बस ऊपर जाना होगा। तो राइट में देख, राइट में। राइट राइट, हाँ कुछ आएगा। यहाँ से आया था? नहीं यहाँ से नहीं आया था। अरे आती हेल्प करते हो इसकी। फ्रीज कर यार ये लोग कैसा मारते हैं यार, हेल्थ इतनी कम कैसे कर देते नहीं पता। गेम भी तो टिपिकल बनाया ना, हो जाएगा धीरे धीरे। गेम भी तो हार्ड होगा ना, हल्का हल्का। यार आर्मर उतना तगड़ा नहीं है सबसे, तभी हेल्थ इतनी जाती जा रही है ना। कोई माना ही नहीं है। घर में शटडाउन सुनता रहता अच्छा कि नहीं? अरे माना खत्म हो जाएगा। अरे पता नहीं लग रहा है भाई, लॉक तो कर। अरे मार दिया यार इनने। अरे यार बैंचो को भी बिना माना के मारना बहुत मुश्किल है। क्या डुप्लीकेट निकाल। अरे मारने हाँ मारने ही खत्म हो गया था। अरे यार इतने पीछे से आता है यार, यही तो लफड़ा है हमारे को। बिगिनिंग से आ रहा है ना। अब नहीं मारूंगा हमारे को। अच्छा बंदर से वापस नहीं करना है। आखिर में मदद से वुकोंग का शेल आएगा जिससे लड़ना पड़ेगा। वुकोंग का शेल जिससे लड़ना पड़ेगा।
अरे मैं कहाँ पे आ गया? उल्टी जगह पे आ गया। अरे रे माँ की कहाँ पे आ गया जिंगा ये? इशारा तो नहीं से हैं? कहाँ जा रहा है भाई? अरे यार कहाँ पे आ गया? गलती से नीचे गिर गया यार। और इस जगह पे पहुंच गया। Faith and devotion, quite the notion. Yet how many can claim a mind so pure, still and sure? Look at you. Through the heavy snow you roam. Desiring that thing, no doubt. I read your fortune before you came. Care to hear? Act not and be still. Thy gifts are thy ill. If you seek your own end, I shall not stop you. I, the keeper of the New West, welcome the destined one. Now fly! ये मत छोड़िए। फॉलो करना ना। See that temple on the lake? Therein lies the thing you seek. The lord of this land is away. Seize it now and leave. यार हम टेंपल में ही है सब जो ये। हालांकि मैच है क्या फ्रांस का? इतनी जल्दी खत्म हो गया नहीं? फ्रांस का मैच है क्या? मैच का पता नहीं है। मैं कह रहा हूँ इतनी जल्दी खत्म हो गया। वो कहता कि जो चाहिए वो वहाँ जो टेंपल पे ही है। अरे जो माँ की छू दी है क्या चीज है? कोई बड़ी गाल है। टेंपल में तो कुछ ना कुछ भूल लग रहा है यार। अपना टेंपल जाओ और गाइड में रहो, ऐसा बोल दिया यार। चले जाऊंगे टेंपल पे डायरेक्ट। आजू बाजू को ढूंढ के जाऊँ। अरे यहाँ पे लड़ाई होगी। बड़ा झोल है, जिनका बड़ा झोल है।
London Station. Doors normally open all right. How delightful. It still recalls your scent. When that monkey was alive, he was all about weeping and begging for help. Now, even in death, he led all you younglings right to me. This sack of mine can barely fit you all. Kang Jinglong, now that you are ready, go and weigh up this one for your master. अरे ये क्या मकसूदी है मैं? This monkey merits a place among my disciples. यार ये मंकी तो पुष्पा जैसा खड़ा है यार, ऐसा लग रहा है। क्या पकड़ लिया मादर चोद अंदर को? अरे मादर चोद, ये क्या कर दिया? खत्म हो गई भाई, हेल्थ खत्म। अरे ये ड्रैगन तो हारना नहीं चाहता यार। कहाँ में तू? पहुंच गया क्या? कितना टाइम? यार मैं निकलता हूँ थोड़ा। अरे दौड़ने जाता है। ठीक है, निकलता हूँ। गेम बंद कर दे तूने? हाँ बस बंद ही करना, एक ट्राई और मारूंगा। अरे पहले मुझे खत्म कर दे रहा है यार। कर दिया, गोल को उठवा दिया बैंक चौक। यार इसको तो मार सकते हैं यार, इजी लग रहा है यार चिंका, है ना।